नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार एसेसरीज में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे BMW X1 मॉडल में इंटीरियर क्लीनिंग और टेफ्लॉन कोटिंग का पूरा प्रोसेस। पहले हम गाड़ी यहाँ से भेजेंगे अपने सर्विस स्टेशन, जहाँ पे हम करेंगे इसकी इंटीरियर क्लीनिंग और उसके बाद इसको वापस यहाँ पे लाएंगे और इसके बाद करेंगे इसमें टेफ्लॉन कोटिंग। SRC छोटे छोटे जो स्क्रैच होंगे वो सब निकल जाएंगे। आपको दिखाते हैं बोनट की अभी की स्थिति क्या है। ये देखिए बोनट पे काफ़ी स्क्रैच हैं। ज़्यादातर जो बोनट पे ये जो स्क्रैचेस आते हैं डॉगीज़ के पंजे के होते हैं। जो डॉगी यहाँ पे चढ़ के बैठते हैं, आराम फरमाते हैं BMW जैसी गाड़ी पे। क्या बात है। तो आज हम करने वाले हैं BMW X1 मॉडल में फुल इंटीरियर क्लीनिंग और एक्सटीरियर में टेफ्लॉन 3M कोटिंग। आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं ये कैसे स्टार्ट होता है। गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, रेडी है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसकी इंटीरियर की स्थिति अभी कैसी है। ये देखिए पूरा जो ये है साइड के दरवाजे ये हम क्लीन करेंगे। ये पूरा गंदा हो रहा है काफ़ी। इसके सीट कवर प्योर लेदर्स के आते हैं, वो भी काफ़ी गंदे हैं। कारपेट पे हम वैक्यूम करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे इसको अच्छी तरह से। इसके साथ साथ डैशबोर्ड पे भी हमारी पूरी पॉलिशिंग होगी, उसको भी पूरा क्लीन करेंगे। रूफ़ क्लीन करेंगे। सीटों की आपको स्थिति दिखाते हैं। इसमें लेदर की वाइट सीट आती है, काफ़ी गंदी हो गई। ये देखिए काफ़ी मैल वगैरह इसमें जम रहा है। इसके ऊपर सीट कवर्स लगाने में लुक नहीं आता। सीट कवर वैसे लगानी भी नहीं चाहिए जब तक सीटें सही हैं। इसको इंटीरियर क्लीनिंग ही कराना चाहिए, जो कि हम इसमें आज करने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इंटीरियर क्लीनिंग करते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं, डैशबोर्ड पॉलिशिंग करते हैं और रूफ़ को क्लीन करते हैं। तो यहाँ से हम गाड़ी भेजेंगे सबसे पहले वॉशिंग के लिए, और उसके बाद वॉशिंग कराने के बाद वैक्यूम वगैरह सब वहाँ से ही इंटीरियर क्लीनिंग होके आएगी और उसके बाद ये वापस आएगी। हम यहाँ पे करेंगे इसमें टेफ्लॉन 3M कोटिंग। ये हमारे सर्विस सेंटर जा रही है यहाँ से। चलिए सर्विस सेंटर में से क्लीन किया जाता है। उसके बाद ये फोम बास का जो स्प्रे होता है उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। फिर लाइट स्पंज से इसको लाइटली पूरा क्लियर करते हैं इस तरह से। ऐसा टोटल 5 या 6 बार करने पे ये जो पार्ट है वो पूरा क्लीन हो जाएगा, जिससे उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा और पूरा स्मूथ, और उसके ऊपर शाइनिंग भी आ जाती है। Doing crazy dreaming.
हम लोग इस तरफ